बारिश शुरू हो गई है और ऐसे मौसम में चाय तो बनती है। अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे सर्विसिंग के लिए भी जाना है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई बी एबल टू गो। Hi guys, welcome back to my channel and I'm going to get my bike serviced. Now it is 2 p.m. and at the end of this video I will tell you my experience and also the costing of the first service, so stay tuned. अभी मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर शूट करने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर मुझे बैठना है एंड दिस इज़ द वेटिंग रूम। From here I can see my bike getting serviced. यहाँ पर इन्होंने पुराना ऑयल निकाल दिया है और अभी ये नया ऑयल डाल रहे हैं विच इज़ सेमी सिंथेटिक ऑयल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड एंड इट इज़ 2.3 लीटर्स। और अभी भी बारिश हो रही है और उसका नाम नहीं है। And you can see my bike is getting washed and it is a pressure wash. So my bike is ready now. So overall my experience was good and it took me about 2 hours, maybe less than 2 hours approximately. So this is how it looks after getting serviced. एक्चुअली 500 किलोमीटर से पहले आपको सर्विसिंग करवानी होती है एंड अभी बाइक बहुत ही अच्छी चल रही है। इट्स लाइक मक्खन एंड इट्स वेरी रिफाइंड एंड स्मूथ। आई एम वेरी लविंग इट। This is the bill and it has costed me 1029.62 paise. So guys, this was how much the service costed, and I'll see you in my next vlog. And don't forget to subscribe to my channel, and you have a nice day. Bye bye.